Hello guys, how are you doing? क्या हाल चाल? Okay, let's get this set up. Anek Singh, has it started? Yes, Anek, it just started. Sorry, 2 मिनट लेट हो गया. I just realized ये StreamYard which I'm using for this streaming, it doesn't work with Safari. तो ब्राउजर स्विच करने में 1 मिनट एक्स्ट्रा लग गया. All right. तो गाइज, दोज ऑफ यू हु आर ज्वाइनिंग इन, ये बताओ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो, सो दैट वी नो कि लोग कहाँ कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं, एंड देन वी कैन अनाउंस दैट. तो अपनी अपनी लोकेशन बताते जाओ, कहाँ से लॉग इन कर रहे हो. दानिश खान says hi sir, good to see you sir. Thank you Danish, good to see you as well. कहाँ से हो दानिश, लोकेशन बताओ आपकी. अजय गुरु इंडिया, क्या बात कर रहे हो. अरे कहाँ हो जनाब, पूना में हो तो बताओ, लेट्स मीट अप फॉर श्योर. गुड टू सी यू. आई एम फ्रॉम दिल्ली इंडिया. ऑल राइट दानिश, that's good. Okay, प्रतीक, आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान. अरे वाह, बहुत बढ़िया जगह है यार उदयपुर. तो मेरे डैड आर्मी में थे, तो वी वर इन जोधपुर फॉर अ कपल ऑफ इयर्स. तो उदयपुर की बड़ी अच्छी मेमोरीज है मेरी. अपने क्वेश्चंस भी साथ साथ डालते जाओ यार, एनीथिंग दैट यू वांट मी टू आस्क, एंड देन आई विल स्टार्ट पिकिंग देम अप एक एक करके. अनेक सिंह बैंगलोर, अरे क्या बात है, बढ़िया. ट्रैफिक कैसा है? बोर हो गया अभी तक अनेक ये क्वेश्चन सुन सुन के ना. Tafun Banerjee, sir from Kolkata, India. Hey Tafun, good to see you. Agile Guru is in Trichy. Okay. Guru, any chances of coming to Pune? Let me know. Let's catch up offline. Pinky Singh, I'm from Pune. Oh, hi Pinky. I'm also from Pune. What part of Pune do you stay in? Okay. Who else is there? Chetan. Hi Paji, how are you? I'm doing very good, Chetan. Good to see you back again. Very good. Hasraj. Harjas Singh. Hey Harjas, सत श्री अकाल. सत श्री अकाल हरजस जी. कितों कितों लॉग इन कर रहे हो, कहां से लॉग इन कर रहे हो, बता दो. आपके क्वेश्चंस भी डालते रहो यार. दिनेश खान, सर प्लीज शो रोड मैप. हाँ दिनेश, आता हूँ अभी क्वेश्चंस पे आता हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट, इंट्रोडक्शन कर लें, फिर आता हूँ क्वेश्चंस पे. प्रतीक, amazing sir, please visit Udaipur once more and relive all the memories plus create new ones too. Sure yeah, sure, absolutely. थोड़ी कम्युनिटी और बढ़ा लें, थोड़े बड़े कर लें, फिर मीटअप रखेंगे उदयपुर में. प्रतीक, कुछ सब्सक्राइबर ला दे मुझे उदयपुर से, फिर मैं आता हूँ, स्पेशली ट्रिप मारता हूँ. चल उदयपुर का, आई विल गिव यू अ गोल. 100 सब्सक्राइबर मुझे उदयपुर से दे दे, चल मैं ट्रिप मारता हूँ, एक लोकल मीटअप रखते हैं. लेट्स डू इट दैट वे. ओके, क्वेश्चंस पे आता हूँ, जरा गाइड कर दें सबको. सॉरी, गाइड नहीं, इंट्रोडक्शन करें. ए फ्रॉम पाकिस्तान. हेलो ए, कैन यू tell me your name and where from Pakistan are you? प्रतीक बोलता, हाँ सर, 100 सब्सक्राइबर फ्रॉम माई एंड शर्ट. चल डन प्रतीक, डन डन. लेट्स सी हाउ सून यू वांट टू गेट मी देयर. लेट्स सी, बता मुझे. ओके, ऑलराइट. So a lot of people joining in. Let me start taking in questions. I have some offline questions as well. लेकिन पहले जो लोग यहाँ पे हैं उनका क्वेश्चन लेते हैं, एंड देन सॉरी, मैं दूसरे स्क्रीन पे, दूसरे मॉनिटर पे लिंक्डइन खोल के वहां पे भी चेक कर रहा हूं कि वहां पे कोई कुछ तो नहीं डाल रहा. ओके चलो ठीक है, यहाँ वाले क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उधर जाएंगे. ओके, पहला क्वेश्चन अभय. हाँ, ये मिस कर दिया मैंने. अभय, हे अभय. हेलो सर, आई एम अ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फाइनल ईयर स्टूडेंट गोइंग टू डू बीटेक, वांट टू मेक करियर इन डेवऑप्स, नीड अ गुड रोड मैप फ्रॉम यू.
तो अबे मेरे चैनल पे देखो, मैंने अलग अलग 2 टाइप के रोड मैप बनाए हुए हैं ऑलरेडी. गो एंड हैव अ लुक, एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन. तो 1 to 1 बात कर सकते हैं. बट जेनरिक रोड मैप फॉर पीपल फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, दोनों मैंने डाले हैं, वो जाके देख लो आप. और अगर कुछ 1-on-1 क्वेश्चन भी है किसी को, तो आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन टॉपमेट. किसी को अगर 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए, जो कि यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो सकती, कुछ 1-to-1 गाइडेंस आपको चाहिए, तो यू कैन विजिट दिस मतलब दिस टॉपमेट. यहाँ पे जाके आप मुझे सर्च कर लो एंड यू कैन बुक 1-on-1 टाइम विद मी एज वेल, एंड देन वी कैन हैव एन ऑफलाइन कॉन्वर्सेशन. राइट? ओके. कृषानु चक्रवर्ती, हेलो सर फ्रॉम कलकत्ता. अरे कलकत्ता से बड़े दिन लोग आए हैं यार आज. वेरी गुड. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ओके. हाँ, तो रोड मैप तो ठीक है, यू कैन हैव अ लुक एट माय यूट्यूब चैनल. आई हैव द रोड मैप देयर. ओके, लेट मी सी व्हाट अदर क्वेश्चंस आर देयर. Sir, please show roadmap how to start as fresher and how we do internships in DevOps while first year BCA. Okay, how to start as fresher. So same answer again. Go to my channel. I have DevOps roadmaps. You can have a look. Now for your second part, how we can do internships in DevOps while in first year BCA. So first of all, you'll have to decide what 2-3 things you are good at while in BCA first year. And then there is something called learn in public. Right? Learn in public is whatever you're doing, you have to demonstrate that in public. Now, it could be in developer forums like Hashnode, which is a forum which you can join free of cost. और वहां पे बहुत सारे लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे अपने ब्लॉग्स डालते हैं. थिंक ऑफ इट लाइक अ ब्लॉग साइट. राइट? तो बेसिकली फंडा क्या है यार, कि हजारों लाखों लोग बीसीए कर रहे हैं. राइट? How do you separate yourself from the crowd so that when you go to a company for internship, or if companies are coming to your college for internship, how do you identify yourself as slightly different from the rest? And the only way to do that today is to showcase your work. Now, whether you're looking for internship, whether you're looking for a remote job, the answer is still the same. You do the work, you put it in public, and you do enough work so that the right people who you want to see, they should be able to see your work. ये shortcut तो नहीं है कोई. Right? I will only give you the long cut, but if you follow what I tell you, you will definitely get there. उसमें कोई doubt नहीं है. I hope that answers your question. Okay, let's look at new questions. I'm a full stack developer having 11 years experience. Suggest me some guidance to grab remote job. Yeah, so let's talk about this. And I'm making a dedicated video also on how to pick up a remote job. Now, there are 2 ways of picking up a remote job, right? One very popular way, or when you look at a lot of LinkedIn or a lot of YouTube today, they will give you some websites, 15-20 websites, remote me, remotive, blah blah blah, which will have a lot of remote job postings. And you look at it and you get very excited. अरे बहुत सारे remote jobs हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी. Now, my experience with these is that there is a problem with a lot of these websites. I'm not saying that you don't get a remote job from these. I'm saying the possibility, the chances of getting a remote job from any of these websites is very, very less. And I'll tell you why. Number one, most of the remote jobs mentioned here are remote to the country, which means अगर यूके का जॉब है तो वो रिमोट है, लेकिन सिर्फ यूके में रिमोट है, इंडिया से रिमोट नहीं है वो, क्योंकि वो आपका वीजा प्रोसेस नहीं करने वाले हैं. That's number one. Second, a lot of these remote jobs are not full-time jobs. They are contracting jobs. Depending on the country, the contracting rules apply. Most probably, you will still need a work visa.
वहां जाके अटक जाते हैं. Third, it's very, very tough to find a remote job like this. Now, if you are, 5-7 years experience, still there is a possibility, but above 10-15 years experience, to find a remote job like this through websites, I have not personally seen it happen. Maybe होता होगा. मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये बहुत ज्यादा होते हुए नहीं देखा है. तो नाउ, हैविंग सेड दैट, रिमोट जॉब लेना कैसे है? लाइक आई सेड, इमेजिन करो आप की कंपनी है जर्मनी में, राइट, और आपको एक रिमोट वर्कर ढूंढना है, आपको एक फुल स्टैक डेवलपर ढूंढना है. क्यों ढूंढना है? क्योंकि जर्मनी में आपको फुल स्टैक डेवलपर मिल नहीं रहा. तो आप ढूंढना शुरू करोगे जर्मनी के बाहर. टिपिकली यूरोप में ढूंढोगे, पहले नहीं मिलेगा, यूके में एक्सटेंड करोगे, वहां नहीं मिलेगा तो आप यूके के बाहर एपैक में ढूंढना शुरू करोगे. एपैक से करते करते आपको कोई तो बोलेगा यार इंडिया में बड़े बंदे मिलते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, इंडिया में चेक कर लो. तो आप इंडिया में आओगे, राइट. विच मीन्स ये सारे लेयर्स क्रॉस करके बंदा इंडिया में आके सर्च मारेगा कि फुल स्टैक डेवलपर इन इंडिया रेज्यूमे और समथिंग. अब ये सब में आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट होनी चाहिए, उसको दिखनी चाहिए, तब तो इंटरव्यू होगी. ये इंडिया जैसा नौकरी मॉन्स्टर इंडीड वगैरह नहीं है, राइट. हियर पीपल आर लुकिंग आउट फॉर पीपल. हाउ विल दे फाइंड यू? Which means you have to do something which will make you so different from the 10,000 other full stack developers out there, so that when somebody is looking for a full stack developer, your name pops out on top. How do you do that? Again, same answer. Put your work in public, put it for long enough, and do meaningful contributions and connect and network with people, so that when the right people are looking for you, you pop up there. I know it was a slightly lengthy answer. अगले थर्सडे फ्राइडे तक एक और डेडिकेटेड वीडियो आएगा इसके ऊपर. यू कैन हैव अ लुक एट दैट. बट होपफुली मनोरंजन, अरे सही नाम है यार, होपफुली आपका क्वेश्चन आंसर हो गया. ओके, अरे बहुत सारे कमेंट आ गए, चलो एक एक करके करते हैं. ओके, Anik Singh, I have overall 10 years Java backend engineer with 5 years in ETL. Spark GCP. Now I want to understand what should I focus. My interest is understanding design system, database engineering. 5 years in ETL, Apache, Spark, GCP. Now I want to understand what I should focus. My interest is system design, database engineering. So, Anik, firstly, my guidance is that you should do something, because you already have 10 years experience. You should do something which will leverage these 10 years of experience as a backend, as a Java engineer, or as a ETL guy. You can't let this experience go waste. It's not been 2-3 years that you've been doing this stuff. You've done this shit for 10 years, right? So whatever direction you decide to go, it has to be built on this 10 years of experience. Only then it makes sense. Now, if your interest is understanding system design, that's fine, I get that. But ultimately, what role are you looking for? Are you looking for your solution architecture role? Are you looking for a role to transition out of software in product engineering, product management with the system design approach? I'm not clear. Database engineering. What do you mean by database engineering? What is your understanding? Are you going towards I hope you're not talking about the traditional database admin guys, because that role is dead. Hopefully you're talking about data science, which will lead you into ML, or things like knowledge graphs and deep knowledge, those kind of things. If that is where you're going, that makes sense, because it ties in somewhere to your ETL experience. So that's the overall, without understanding a lot more. If you want, we can have a one-to-one conversation and I can give you further guidance. But jitna aapne bola uske hisab se, that's what I can
suggest to you. But bottom line वही है, आपके 10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसे वेस्ट मत जाने दो, उसके ऊपर बिल्ड करो आप. ओके, और देखते हैं कौन है. My interest is underpinning database design, want to design, work on distributed systems. हाँ, want to work on distributed systems ये ठीक है, but as a developer, as an architect, as a person who's coding or as a consultant, which role? थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा नहीं तो मैं ज्यादा बता पाऊंगा. ओके ओके. हरजस बोलता है पाजी, आई एम सेकंड ईयर बीसीए स्टूडेंट, आई वांट सम गाइडेंस टू गेट एन इंटर्नशिप इन डेटा फील्ड. इंटर्नशिप का भी मैंने बताया यार, सेम आंसर है हरजस, कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी फील्ड से हो, सॉल्यूशन सेम है. डू योर वर्क, put your work in public, do it for long enough, and the right people will find you. It's as simple as that, Harjis. Okay. Abhay Singh. Hello, sir. Hello, Abhay. How are you doing? I will give all my subscribers if you do. ये ठीक है यार, गुरुजी ये बढ़िया, अपन आपस में ही खेलते रहते हैं. आई लाइक इट. नहीं, लंदन का चक्कर मैं मारूंगा टुवर्ड्स दिस एंड ऑफ द ईयर, तो डेफिनेटली आना ही है. बट अगर उससे पहले कुछ हो गया तो देखते हैं. आई विल गिव यू अ कॉल टुमारो. Okay, we'll talk tomorrow. Okay. How to get a remote job? Any platforms? Sakshi, I just answered this question about any platforms. Hope you've listened to the answer. If you haven't, तो इसका recording आ जाएगा. You can listen to it. But basically, short answer again. There are a lot of platforms. You can do a Google search and you'll get at least 40-50 websites, platforms which talk about remote jobs. My personal experience in remote jobs is if you are less around 5, 6, 7 years and less experience, chances are getting a remote job on a platform is high. It's possible. With higher experience over 10 years, it becomes very difficult. And the only way to do that is that you don't find a remote job finds you. And how do you do that? You put your work out in public for long enough and the right people will come and look for you. That is how I have got the remote job. That is how a couple of people that I know have got the remote job. Now that could be through open source contributions, through conferences, through LinkedIn, YouTube, whatever. And I'm putting out a dedicated video on that. वो next Thursday या Friday आ जाएगा, आप देख सकते हो उसको. Okay. Sridhara GS. Hello, sir. Help me to come out of phone addiction and also mindless scrolling. Oh, good question. Good question. Very good question. Okay. So, this is a tough one here. To be very honest, this is a tough one because all of us suffer from this, whether we accept it or not, including myself. We are all guilty of this phone addiction and mindless scrolling. Now, the way I deal with this situation is that you cannot go away from phone and scrolling. That's not possible in the day and age that we live, right? But there are a couple of strategies which I use, which have worked for us in our household, and I'll share them with you and see if it makes sense to you. Number one, the most thing which has helped me is I block time for mindless scrolling. It's weird, but I actually got this tip idea from Ankur Wariku. If you know, he's one of the very popular bloggers, YouTubers. So that's what I do now. I block half an hour, 45 minutes, 15 minutes, whatever it is, every day during the daytime. When I know that I'll have free time, I block that time in the calendar and I say phone time. And I know that in this half an hour, I can look at the most stupidest, weirdest reels in the world and I'll be okay. But the trick is when the timer goes up, you stop scrolling, right? So that way, when you're doing this scrolling, you're not mentally feeling guilty and you're enjoying that time.
And you, in fact, look forward to that time that, hey, today at 3 o'clock, I have half an hour where I'm going to do scrolling. So that's one thing where we deliberately schedule time for this scrolling. The only caveat is you have to be responsible enough to stop it when that timer goes off. That's one. The second thing which we do is that every alternate or third, fourth weekend, we collect all the cell phones in the house and we put them in a box on the dining table. And the rule on that weekend is that you will only pick the phone if it rings or you have to call somebody. So phones, tablets, all sorts of these gadgets, we put them in the box, close the lid of the box and put it on the dining table. And you cannot pick up the phone for scrolling, for checking YouTube, for emails, nothing. If you have to check your work email, you have to open up the laptop and then check. Right? You only get the phone if it rings or if you have to make a call. It's a conscious detox for at least a Saturday or a Sunday, and we do this every 3-4 Sundays. So these are the two strategies that I use. Hope that helps you. Okay. A is Bilal that you DM me on LinkedIn today. Oh yes, Bilal. Hi. How are you doing? I remember talking to you. Good to see you, mate. How's it going? Okay. Hello, Paji. Sat Sri Akal from Punjab. Sat Sri Akal ji. Paji, I'm doing Mern Stack. Please give me some tips to crack a remote job as a fresher. नीरज जग्गा. तो नीरज, अभी मैंने बात किया रिमोट जॉब्स का. I think you already have the answer from now. Mern Stack is a good stack. It makes sense to do that, but I would say while doing Mern Stack, don't just focus on the theory of it and lead code problems. All that is good, but develop some real projects out of it. Put the project code on GitHub, write an article on how you selected the project, how you did the coding, publish that on LinkedIn, write that on Hashnode or dev.io, platforms like that. So that way, when you're doing something, when you're learning something, you learn in public, right? And showcasing your work automatically इससे होना शुरू हो जाता है. So hope that helps. Okay. Sridhara said, thank you. Great suggestion. Surely do it. Perfect. Thank you. Let me know how it goes. आज तो संडे, आज तो निकल गया. Next weekend करो and let me know how it goes. Okay. Mern Stack with DevOps. Cherry icing on top. Perfect. Okay, good. Let me look at if there are any other questions. Okay. Shivam, hello sir. What is the scope of data engineering for freshers? So, data engineering as a field will grow. And I'll tell you the reason for that. Because all this AI hype that you're seeing, all this LLM stuff that you're seeing, what is the basis of all of that? All these models which are being built, right? The core for all of that is data. How do you mine data? How do you train data? How do you capture data? How do you retrieve data? All of that is data engineering related. So as we can see over the next 2, 3, 5 years, as these LLMs mature, as AI matures, I think data engineering is a great field to go to. That is what I can tell you today on what the scope is looking like. Now, reality, nobody knows. Because aaj se ek saal pehle, who knew about this AI shit, right? Nobody knows. So today, from the lens that I have, that is what I can tell you. Okay. Ashpreet Singh Anand says, I'm a full stack developer, but in interview, they also ask DevOps field. Of course. Ashpreet, today, if you're a full stack developer, you have to know about DevOps. Because as a developer today, your job is not just to develop and check in stuff and then just leave it. You are responsible for taking that piece of code that you wrote, taking it all the way to production, and even supporting it.
And this is not just true for a full stack developer. For any sort of developer, your responsibility is to take your code to production and then to support it as well. So in this entire SDLC, obviously you are expected to learn DevOps, but the expectation from you, Ashpreet, will be as a user of DevOps, not as a person who's supposed to set up DevOps. So I think that makes it easy. Depending upon, um, so your full stack developer, whatever languages you work on, you should know uska continuous integration, continuous delivery, CI/CD कैसे होता है. दो चार tools पकड़ लो. It's fairly easy. YouTube पे search मारो, and all you need to know about it is from a user perspective. I'm sure आपके organization में भी कुछ तो DevOps होता ही होगा. DevOps engineer को पकड़ो अपने organization से, उससे सीख लो. Should be a couple of days, 1 week job at most. उससे ज्यादा नहीं लगेगा यार. No big deal. DevOps के बड़े बंदे हैं यहाँ, यहीं पे पकड़ लो किसी को. Okay. Girish. Hello, sir. I'm having 18 years Oracle DBA. Any guidance for switching to DevOps? Have experience in automation using Shell and Perl scripting. So, Girish, if I'm not wrong, this Shell and Perl, maybe you've done some 10 years back, right? If I'm understanding you. Or if you're using Shell and Perl for writing your database automation scripts, then it's different. Then it makes sense. Now, same guidance for you, Girish, which I was giving some time back. Yeah. That you have got to build on your 18 years of experience as a DBA, right? Which means you know Oracle DBA like the back of your hand because you've done this shit for a long, long time. Now, all you have to do is figure out in a DevOps world what is happening to Oracle DBA, right? How does that work? And the answer to that is very simple. In your organization, go to the DevOps team and ask them, or do Google search, do GPT, and figure out what happens in a DevOps world to the Oracle stuff, to the changes that you make to Oracle. How are they introduced in the DevOps world? For example, there are tools like Redgate is one which does DevOps for database. Then there is Liquibase. Then there is Datical. These are three tools that I know which are very popular for doing DevOps for databases. What I mean by that is every release has some database changes. So you're making some changes to the database tables, schemas, whatever you're changing anything, right? Now, the traditional way is to write some small scripts and to execute your queries on production. However, there are smarter ways of doing this in a DevOps world. So check out these tools and start from there. They will build on your existing knowledge, right? That would be your entry into DevOps. I will type the tools here. Liquibase, uska enterprise version is Datical, Redgate, and there was another one, Flyway. These are all database automation tools. Okay, you can have a look at them. Okay. Oh man, lots of questions. Let me figure out where I was. Sir, this is the roadmap I made from research. Abhay, I can't see the roadmap. Give me a link. Attach it somewhere. We can't see it here. Okay, sir, I'll be booking for a one-on-one session. How can I get more than 45 minutes? In my case, it will take more than 45 minutes. Pratik, I can promise you 45 minutes is enough. Book one slot and then we'll see if we need more time. We can book another one. But don't worry about it. 45, no more. Nobody needs more than 45 minutes. We'll figure it out. Don't worry about it. Book one and that's it. That's enough. We'll go from there. Don't worry about it.
Okay. All right. Sir, I got a job as a fresher DevOps engineer. Any advice on what I should focus on learning? Firstly, Shubham, congratulations on getting this job. Well done. A lot of people in the chat maybe have the same question. How do I get the job as a fresher DevOps engineer? They can reach out to you. You can answer that much better than I can. Any advice on what I should focus on learning? Buddy, anything and everything that you can learn. First of all, you should become a very, very good DevOps engineer. That's the first goal. So the team that you are in, I'm assuming there is a team, there are at least one or two other DevOps engineers. In the next 6 months to 1 year, you should be the go-to guy in that DevOps team. पूरे डेवलपर कम्युनिटी में, आपकी कंपनी में जितने भी डेवलपर्स हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम आए, वो आपके पास आनी चाहिए, किसी और के पास नहीं जानी चाहिए. दैट्स योर गोल नंबर 1. अगर ऐसा हो गया तो आप अपनी कंपनी के टॉप डेवऑप्स इंजीनियर अपने आप बन जाओगे. जितने ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो करो, बस इतना कर लो, बाकी अपने आप सीख जाओगे. होप दैट मेक्स सेंस. Should I book a second call after that, or can we take? Yeah, just book one call, man. Don't book 2, 3 calls. One is enough. We'll see. At the end of it, if we need more, we'll figure it out then. One is enough. अशप्रीत, कुबरनेटिस का सर्टिफिकेशन का सोच रहा हूं. CKA, CKD कुछ बेनिफिट होगा या सिर्फ स्किल्स ही आनी चाहिए एज फुल स्टैक डेवलपर? सो Ashpreet, this depends on what kind of job you're looking for. If you want to focus as a full stack developer, तो फिर तो Kubernetes certification की जरूरत नहीं है. अगर आपको Kubernetes यूज करना आता है, that should be good enough. आपका एक्सपीरियंस लेवल भी नहीं पता मुझे, but assuming that it is, see, here's my take on certifications. अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही है, तो certification is a good way to get you an entry. Because when I see a CKA or a CKD certification, I know कि बंदे को इतना तो आता ही है, कम से कम सर्टिफिकेशन तो क्लियर कर ही ली है, तो बेसिक डाउट क्लियर हो जाता है. उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएंगे आपको, सब होगा, राइट? या फिर अगर ये सर्टिफिकेशन अगर कर रहे हो या प्लान है, तो उसका सोल्यूशन है. अगर नहीं करनी सर्टिफिकेशन, इंपॉर्टेंट ये है कि काम आना चाहिए. अगर आप काम अपना दिखा पाए, एक कुबरनेटिस क्लस्टर आपने क्लाउड पे सेटअप किया, उसको मैनेज कर रहे हो, उसका ऑटो स्केलिंग दिखा पा रहे हो, उसका कोड आपका गिटहब में है, उसका आपने डॉक्यूमेंटेशन लिखा है, आई कैन बेट यू दैट इज बेटर देन एनी सर्टिफिकेशन एनी फ्रीकिंग डे. If I have two people, one with a CKA and a CKD and another guy who says, सर मेरा ये कुबरनेटिस का प्लेटफॉर्म है, ये क्लाउड है, यहाँ पे सेटअप है, ये इसका लॉगिन है, यहाँ पे जाके आप क्लस्टर्स देख सकते हो, ये मैंने ऐसे, ये उसका आर्किटेक्चर डायग्राम है, मैंने ऐसे सेटअप किया है, ये गिटहब का लिंक है जहां पे सारा कोड पड़ा है, ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने लिखी है, अब बताओ क्या सवाल है, कौन सा वाला बेटर है? दैट्स माय आंसर. बुक 3 स्लॉट्स में अजाइल गुरु से मिस गाइड मत करो लोगों को. सर, व्हाट आर योर व्यूज ऑन फुल स्टैक डेटा एज करियर एंड व्हाट कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट? ये तो मैंने आंसर किया अभी यार, शिवम. ओके, और क्या है? फ्लाईवेडीबी, यस, ऐड किया मैंने. अच्छा, ये रोड मैप अजय अभय ने जो बताया. ओके, एसडीएलसीज, ओएस लिनक्स, स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग, गिट फॉर वर्जन कंट्रोल, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, क्लाउड, एडब्ल्यूएस. हाँ ठीक है, बुरा नहीं है रोड मैप यार, शुरू करो, इतना तो करो. लेकिन मेरा इसमें पॉइंट एक ही है, ये सब ना आप किताब में भी पढ़ सकते हो, साइट्स पे भी देख सकते हो, हर एक के 50 यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो. पॉइंट वो नहीं है. पॉइंट ये है, अभी आप बोल रहे हो स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग. अब what I would want to see in this is the 20 scripts checked in GitHub that you've created, right? Networking and security,
If you're using AWS, that's perfect. Go on AWS, create a subnet, create a VPN, सेटअप करो, सबनेट बनाओ, अगर हो सकता है तो प्रॉक्सी सेटअप करो. ये नेटवर्किंग सिक्योरिटी के जो फंडे हैं जो बोल रहे हो ना, एक्चुअली इंप्लीमेंट करो क्लाउड पे, और उसका जो कोड है उसको कॉन्फ़िगर करो, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसके YAMLs बनाओ, उसको वर्जन कंट्रोल में डालो गिट के, तब बनती है बात. ये अलग अलग ऐसे टॉपिक के 10 यूट्यूब वीडियो देख के कुछ ना होने वाला. काम करो, काम पढ़ो मत, पढ़ाई मत करो, काम करो, एक्चुअल एग्जीक्यूशन करो और उसको शोकेस करो दुनिया को, तब मजा आएगा. ओके गिरीश, Guru is offering you help. Please go ahead. He has a lot of experience. Please reach out to him. Guru, if you can put in your LinkedIn or email, whatever mode you want people to reach out, I will publish it here as well. Infrastructure as code, Terraform and Ansible. ये मैंने किसी ने बोला था, लिंक्डइन पे डाला था किसी ने कुछ दिन पहले. Terraform and Ansible का combination is called terrible. I liked it. Microservice containerization, orchestration, Kubernetes, CI/CD pipeline, monitoring, logging, GitOps. आइडिया बहुत अच्छे हैं वे. ओनली वन थिंग, एग्जीक्यूशन. इनको अलग अलग टॉपिक्स करके मत पढ़ो, इनको कंबाइन करके इनका एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसको गिटहब पे डालो, तब बात बनती है. बट एज अ रोड मैप इट्स अ गुड वन. रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कहां से ढूंढे? अमन कुमार. हाँ अमन जी, गिटहब का नाम सुना है? उसमें बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं बेस्ड ऑन व्हाट योर टेक्नोलॉजी स्टैक इज, वहां पे मिलते हैं. CNCF में जाके ढूंढो रियल लाइफ प्रोजेक्ट. CNCF प्रोजेक्ट्स लिंक देता हूं, एक मिनट. CNCF इज क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशंस. उसमें जाके बड़े सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे आपको, ओपन सोर्स जो हैं, वहां से जाके देख सकते हो. ये CNCF प्रोजेक्ट्स का एक सेकेंड. हाँ, ये CNCF के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे जाके देख सकते हो. देन व्हाट यू कैन आल्सो डू इज गुड फर्स्ट इशू. हाँ, ये गुड फर्स्ट इशू करके एक साइट है, goodfirstissue.dev. यहाँ पे बेस्ड ऑन योर टेक्नोलॉजी स्टैक बहुत सारे आप प्रोजेक्ट्स देख सकते हो. एक सेकंड में स्क्रीन प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं. ओपन सिस्टम सेटिंग, एक सेकंड भाई. अरे यार, लेटर, सॉरी, वो क्रोम रीस्टार्ट करने को बोल रहा है, वो मुझे नहीं करना है. बट आई विल पुट द लिंक हियर विच इज गुड फर्स्ट प्रोजेक्ट्स. यहाँ पे आपको बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, ओपन सोर्स इश्यूज मिल जाएंगे जिसको आप फिक्स कर सकते हो. इट्स होप दैट हेल्प्स. ओके, कहाँ थे हम यार? गुम गए. ओके, Ajay Guru, thanks. We'll get in touch with you. Perfect. Hello, sir. Please make a Discord community. आइडिया अच्छा है यार, मुझे मॉडरेटर चाहिए. मेरे पास ना ऑनेस्टली टाइम नहीं है डिस्कॉर्ड कम्युनिटी रन करने का. अगर आप में से कोई वॉलंटियर कर सकता है डिस्कॉर्ड सेटअप करके उसको रन करने के लिए, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट यू गाइस. सो आई एम लुकिंग फॉर हेल्प. एनीबडी हु वांट्स टू डू दैट, please, if you need any help from me, any little bit of investment here and there, I'm happy to do that. But I need one of you or couple of you to come together and run that community for me. क्योंकि मैंने ना ऐसी communities बहुत देखी हैं. कम्युनिटी शुरू करनी आसान है, उसको मेंटेन करने में फाइट है. तो अगर आप में से कुछ लोग वॉलंटियर करते हो तो हुक मी अप ऑन लिंक्डइन, डेफिनेटली शुरू करेंगे. आई एम ऑल देयर टू सपोर्ट. बताओ मुझे. Aman Ping, senior mentors, some ideas. For sure. Yes, of course.
सर एज ऑफ 40 करियर चेंज करना है आईटी में, तो आईटी कौन सा फील्ड चूज करनी चाहिए? अभिषेक सर, एज ऑफ 40 करियर चेंज करना है आईटी में, तो आईटी में कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए? क्लाउड, डेवऑप्स, डेटा इंजीनियर। ओके, गुड क्वेश्चन अभिषेक। तो मैं आपको, मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसपे मैंने रोड मैप दिया है ऑफ हाउ टू गेट इनटू डेवऑप्स फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड। हाँ, मैं आपको लिंक देता हूं उसका, आप वो वीडियो देख लो, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आंसर इतना सिंपल नहीं है तो देन वी कैन हैव अ वन टू वन कॉन्वर्सेशन। ओके, आप ये यहां से कॉपी करना मुश्किल है, बट इफ यू गो टू माय चैनल एंड लुक फॉर रोड मैप्स टू डेवऑप्स रोल विदाउट डीप टेक्निकल नॉलेज, ये टाइटल है उस वीडियो का। इसमें आप देख लो, मैंने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आंसर किया है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, नॉन आईटी बैकग्राउंड से आप हो, तो भी डेवऑप्स के कौन से रोल्स हैं। सो डेवऑप्स के एक तो टेक्निकल रोल्स हैं जो आप बोल रहे हो, यू नो, द डेवऑप्स इंजीनियर, द डेवऑप्स आर्किटेक्ट, all of that. Then there are some non core, or like I call it allied roles, right? Like there is a community manager role. Then there are multiple things. वो सारे इस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। ओके यार, किधर चले गए हम? ओके ओके सर, आई एम इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, व्हाट आई लर्न फर्स्ट टू बिकम डेवऑप्स इंजीनियर? कॉलेज में हम मस्ती कर यार, क्या है, फर्स्ट ईयर में है, चिल मार, तू क्या है, तेरे पे बहुत टाइम है, अभी 3 साल तो नहीं है, 3 या 4 साल डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग। फर्स्ट ईयर कौन पढ़ता है यार, चिल मार, बाकी बाद में देखेंगे। अमन का, अमन यादव, रिलैक्स कर मैन, बहुत टाइम है तेरे पास डेवऑप्स इंजीनियर बनने का। पहले साल मस्ती कर, क्योंकि जो मस्ती फर्स्ट और सेकेंड ईयर कॉलेज में होती है ना, वो लाइफ में दोबारा कभी नहीं होने वाली है। तो जो काम फर्स्ट और सेकेंड ईयर में करने चाहिए वो सारे कर डाल। मैं बताता हूँ क्यों, आज शायद समझ में नहीं आएगी तुमको, बट देयर आर लॉट ऑफ सीनियर पीपल हियर ऑल्सो। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो अपने लेट 30s 40s में आके अब वो करने की इच्छा रखते हैं जो उन्हें कॉलेज में करना चाहिए था। कांड हो जाता है तब। तो अमन, डेवऑप्स गया भाड़ में, टेंशन मत ले, सारे कांड काट डाल जो कॉलेज में करने चाहिए। रिलैक्स, 6 महीने बाद बात करेंगे तेरे से। यू हैव फन मैन, कम ऑन, चिल। How to get started with FinOps? So, Jay Kumar, because you've asked this question, I'm thinking you already know what is FinOps. You already know about FinOps.org. Now, depending on what context you are talking, whether you're talking the cloud context or an on-premise context, if you're in the cloud context, then for your service provider, whether it's Azure, AWS or GCP, there are FinOps solution from each of these cloud providers as well. So start from there. So look at cloud provider FinOps solution, and then look at proprietary FinOps solutions where these are from third parties, which will be cloud neutral. So that's how I would approach it. Cloud specific first, and then cloud neutral later. Okay. I have 14 minutes more, so I'll go a little quicker and try and answer as much as I can. I'm in the first year of Aman का तो हो गया, अमन तो पार्टी करने गया, भेज दिया मैंने उसको। चिराग अरोड़ा, सर फ्यूचर ऑफ डेवऑप्स, क्या ये रोल आने वाले टाइम में डेवलपर्स ही करेंगे? अच्छा, गुड क्वेश्चन। तो चिराग, सी, थॉट तो आज भी यही है कि ये रोल्स डेवऑप्स को करने, सॉरी, डेवलपर को करने चाहिए, बट देयर इज अ सेग्रीगेशन. You need a DevOps engineer to be able to get the tools, get the plumbing in order, right? And once it is set up, once it reaches a certain level of maturity, then the developers are supposed to pick it up and take care of it. But you still need DevOps engineers
to set up the tools, to set up the integration, to set up the process, to onboard new teams on that, to onboard new projects. So that role will always stay with the core team. Now you call it a DevOps team, you call it a platform engineering team. There are differences in each one of these, and we can talk about that later. But these roles will stay, and once it reaches a level of maturity, then the developers will pick up all of this and do it on their own. So I think these are two separate things. In the foreseeable future, I think the future of DevOps is extremely bright, especially with all this AI and LLM things coming in. I think the future of DevOps is more brighter because of AI than lesser. That's what is my thought. Raj says, good evening, sir. Good evening, Raj. सर जॉब नहीं लग रही है डेवऑप्स में. भाई थोड़ा तो और बताना यार, क्यों नहीं लग रही, क्या हो रहा है, इंटरव्यू कॉल्स भी आ रही हैं कि नहीं, कि कॉल्स ही नहीं आ रही हैं, कुछ तो और कॉन्टेक्स्ट देना यार. ऐसे क्या बताऊं राज. तो जेनरिक क्वेश्चन का जेनरिक जवाब देके मतलब नहीं है, कुछ कॉन्टेक्स्ट दे दे, और नहीं है तो फिर टॉपमेट में जाके मेरे से 1-to-1 सेटअप कर ले तो हेल्प कर पाऊंगा यार, ऐसे मुश्किल है. Sridhar says, sir, how about AI knowledge for a staff engineer who is always concentrate on system backend development and sometimes as full stack? So see, Sridhar, of course, AI knowledge is relevant for everybody, not just a full stack developer or staff engineer, but AI as applied to backend development and on system engineering. That's what you have to look at. So, for example, if Sora, which was released a couple of weeks back, or if ChatGPT 4.0, you have to think what it means for backend development. Otherwise, yeah, there are a million things happening in AI. How do you give a shit? Right? Knowledge, skill, mastery. 3 things that I spoke about in my podcast also with Parag, which a lot of you have probably seen, right? You should have knowledge of everything going on. Out of those 100 things which are going on in AI, figure out which one of these is relevant to you, which one of these your organization is focused on, and then out of those, what 1 or 2 things are applicable in your field. Knowledge, skill, mastery. That's how I would advise you to study about AI as well. सर मेरी, हाँ ये तो राज तो बात हो गई मेरी. Yashwant Singh. I'm a mechanical engineer with 2.5 years of industrial experience learning DevOps for a year. Now, 6 months ago, I quit my job and switched to IT. Any advice for fresher looking for a job? Same advice, Yashwant. There is no magic bullet. When you say learning DevOps for an year. So when you say learning DevOps for an year, can you show me 10 things that you have actually written, coded? Do you have a GitHub profile worth looking at? Do you have a code there? Have you written some blogs? How do I know that you know stuff without getting into the interview? If you can prove that, then you'll have a successful interview. That's my only guidance to you. Hope it makes sense. And again, for people who want to move into DevOps or IT, please never quit your jobs. You can learn 2 things. Until you have the next job, don't quit, because then the pressure of getting the job mounts and गलत डिसीजन हो जाते हैं उसमें. कंट्रोल करो, थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, लेकिन ऐसे स्विच मत मारो यार. Gautam, respect from Jaipur, sir. Thank you, Gautam. As a fresher Java developer, I did some certification in Java. I got job 2 years ago, but not able to survive there. Today, I'm starving for job. What should I do? गौतम, पहले तो जो नौकरी मिल रही है ना उठा ले. डोंट वरी, जावा की मिलती है, कोई भी मिलती है. सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब होना. उसके बाद आता है अच्छी जॉब होना. तो
today I would not worry about what kind of job I'm getting, whether it is Java, non-Java, production support, backend support, night shift. I would not care about it, because once you have a job under your belt, your basics are taken care of, right? Your roti kapda makan is taken care of. Then you start looking for a better job. Then you start upskilling yourself. So right now, if you don't have a job, then I would say pick up the first one that you can pick up. जो जैसी टूटी फूटी मिलती है उठा लो, छोटी कंपनी में जो जहां मिलता है उठा लो, और उसके बाद आगे इंप्रूव करते रहो और स्विच मारते रहो और स्विच मारते रहो. परफेक्ट हाई पेइंग जॉब की वेट मत करो. दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन. Shubham says, Sir, I'm now applying as a front end developer in a startup company. After 1.5 years of knowledge, how can I get a remote job? Exactly which technology I should learn to get high package? Shubham, ये मैंने ऑलरेडी बात की है. आप अगर शुरू से नहीं हो तो आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो. And specifically on remote job, I'm creating a video. It should be out by next Thursday or Friday. All of these questions are answered there. Yeah. I have just 7 minutes. I'll try and answer as many as I can. हाँ, ये तो हो गया. Agile Guru, Abhay, it is like going on a party with Sanpuri, only roti. You need to you need end-to-end solution. Correct. सही पकड़े हैं. Sir, reference interview. मतलब राज. Sir, reference interview. जॉब नहीं लग रही है. रेफरेंस इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू नहीं हो रही या इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रही या कॉल नहीं आ रही इंटरव्यू के लिए, वो भी नहीं समझा अभी तक यार. राज राज भाई तू बात ही कर ले, नहीं समझ आ रही. ग्रेट रोड मैप, वी कैन प्लान फॉर बिल्डिंग समथिंग टुगेदर, वी कैन कनेक्ट. श्योर. या दिस ऑल कम्युनिटीज आर बॉर्न परफेक्ट. हेलो सर, यस शेयर. स्कैल्पर किंग ऑफिशियल, ये कोई गेम का है क्या यार? हैं यश, क्या है ये लोगो यार? वो तो समझा दे भाई. Darshan Raut. Hello, sir. Darshan here. Hello, Darshan. How are you doing? Hey, Bilal. Bilal from Pakistan. I'm 12 past. I'm working in Golang with 3 years of experience. I also have a tech YouTube channel, 2K subscribers, and Hashnode. I applied 500 plus jobs but didn't get a remote job. 500? So, Bilal, help me understand this. You applied to 500. How many interviews did you get? Right? Because even if you got 10% interviews, that is still 50 interviews. In 50 interviews, if you're not able to get a job, then there's some fundamental problem. Or I would assume you didn't even get 50 interviews. You probably got 4 or 5 interviews, or वो for whatever reason clear नहीं हुए. That would be my guess. Right? बताओ मुझे मैं ठीक guess कर रहा हूँ कि नहीं. And you're 12th pass and working in Golang with 3 years of experience. Okay, fair. Hanji sir, working as system engineer with 5.3 CTC, where I have started my earning in data scientist. Is my decision is good or should I go for DevOps? System engineer with where I have started my learning in data analyst. तो यार अब ये थोड़ा वेग क्वेश्चन है ना. आपका इंटरेस्ट कहाँ है? आपको डेवऑप्स में कुछ ट्राई किया है बस जस्ट बिकॉज उसमें आपको लगता है कि पैसे ज्यादा मिलते हैं इसलिए स्विच मारना है? और आप जो लर्निंग कर रहे हो डेटा एनालिस्ट की, वो आप आई एम अज्यूमिंग थ्रू अपना जॉब से तो नहीं कर रहे, बिकॉज जॉब तो आपका सिस्टम इंजीनियर है, मतलब सपोर्ट वाला जॉब है, राइट? तो डेटा एनालिस्ट क्यों पढ़ना शुरू किया? क्योंकि AIML का बड़ा हल्ला मचा हुआ है इसलिए क्या? थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, थोड़ा समझाओ. कि या फिर ऐसा है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पैसे कमाने हैं. अगर वैसा है तो वो बता दो, उसके हिसाब से गाइड कर पाऊंगा यार. क्योंकि जिस चीज में अगर मजा नहीं आ रहा है ना,
तो कर नहीं पाओगे यार ज्यादा देर। थोड़ा अपना लाइकिंग डिसलाइकिंग बताओ, थोड़ा कुछ बताओ, तभी गाइड कर पाऊंगा, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। सिस्टम, हाँ ये वही 2 बार डाला आपने, ठीक है। आई एम नाउ अप्लाइंग एज अ front developer in a startup company after 1.5 years of knowledge. Can I get a remote job? Exactly which technology should I learn to get high package? हाँ, ये तो अभी मैंने आंसर किया यार। Respect from Jaipur, sir. I am a fresher Java developer. I did some certification in Java. I got job 2 years ago, but I was unable. हाँ, ये भी गौतम का भी अभी लिया मैंने। ओके, फाइंड गुड टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ट्राई करना चाहिए बिल्कुल। सर डेवऑप्स टूल में हैंड्स ऑन के लिए एडब्ल्यू सर्टिफिकेशन कर लूं? यार हैंड्स ऑन ही करना है तो हैंड्स ऑन करना, उसके लिए सर्टिफिकेशन क्यों कर रहा है? प्रोजेक्ट बना, सेटअप कर, जो डेवऑप्स टूल सोच रहा है उसके लिए कर, उसके लिए सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, काम कर भाई। अगर कोई और रीजन है सर्टिफिकेशन का तो वो कर ले, दैट मेक सेंस। दिल की बात बोल दी हमने। हम सीरियसली थिंक ऑफ स्टार्टिंग एजुकेशन। या व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। सर हम नॉट अप्लाइंग। यार ये रिपीट क्यों हो रहे हैं? अच्छा, आपने 2-3 बार डाले हैं आई थिंक। ओके ओके, अंडरस्टूड। सर अशप्रीत सर, मैं 5 डेज प्रोडक्टिव होता हूँ ऑफिस, मैं 5 डेज प्रोडक्टिव होता हूँ ऑफिस आवर्स में, रात तक थक जाता हूँ, सैटरडे संडे सोने में निकल जाता है, लर्निंग कम होती है। भाई अगर ऐसे पैसे कमाने हैं ना जिसने, जो बाकी लोग कमा रहे हैं, तो वो करना पड़ेगा जो उन्होंने नहीं किया है। अशप्रीत सिंह, मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। मुझे भी कोई शौक नहीं है ना यार रात को 9:30 से 10:30 बजे यूट्यूब लाइव करने का, राइट? हसल है ना, कीड़ा है ना, तभी कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि कम्युनिटी बढ़ानी है और कुछ गोल्स है मेरे वो अचीव करने हैं, इसीलिए कर रहा हूं ना यार, नहीं तो जिंदगी बढ़िया चल रही है। तो अगर कुछ गोल है, कुछ करना है, तो भाई उसके लिए फाइट तो मारनी पड़ेगी। क्योंकि अगर सैटरडे संडे को नींद भी पूरी करनी है तेरे को, और ऑफिस से आके थक भी जाता और उसके बाद भी काम नहीं करना, तो फिर खुश रह यार, फिर परेशान मत हो। दोनों में से एक काम कर। परेशान हो रहा है तो काम कर ले, और नहीं काम करना तो परेशान होना बंद कर। जो है जिंदगी बढ़िया चल रही है उसको एंजॉय कर, टेंशन मत ले, दैट इज ऑल्सो फाइन। प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों के बीच में फंस जाते हो, कि करना भी है, जॉब भी चेंज करनी है, वो बड़ी बड़ी सैलरीज भी उठानी है, लेकिन मेहनत नहीं करनी, फिर फाइट है स्प्रिट, फिर तो कुछ ना हो सकता भाई। सोच ले यार। और अगर कुछ नहीं करना और एंजॉय करना है, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली गुड लाइफ टू लीड। डोंट गेट इनटू एनीबॉडीज प्रेशर, राइट? जस्ट बिकॉज उसकी 20 लाख 50 लाख की जॉब लग गई, वो गूगल में चला गया, डजेंट मीन आपको भी करना है। इफ यू आर हैप्पी लीडिंग द लाइफ दैट यू आर लीडिंग एंड हैविंग अ गुड टाइम ऑन अ वीकेंड, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट, राइट? तो टू ईच देयर ओन, just don't get confused between the two things. Can we get a job in Europe from India? Sakshi, I got one, Sakshi, and I told you how to do it. Can you get it? Of course you can. Anybody can get it, provided you are willing to do what those people did who got it. ठीक है? हमको ऐसे स्पेशल थोड़ी हूं मैं, ऊपर से थोड़ी टपकी है, मेहनत की है, और ऐसी मेहनत की है जो बहुत कम लोगों ने की है, इसीलिए इंडिया में बैठ के यूरो में पैसे कमा रहे हैं। आई एम नॉट बोस्टिंग, बट दैट्स द ब्लडी फैक्ट। मिल सबको सकती है, उतनी मेहनत करो। कि शाहरुख खान कोई और बन सकता है? कि एब्सोल्युटली बन सकता है।
उतनी मेहनत उतनी इंटेलिजेंस लगाएंगे तो कोई भी बन सकता है, नो बिग डील. What skills are necessary to grab an internship in data field? I got around 2-3 months to prepare. Arjis, I spoke about data field. So I think I'm just going to take one or two more, and then we'll wrap up. Chirag, thanks a lot, sir, for my question. Thank you, Chirag. Don't quit even when you're financially secure or a wealthy person like correct. I agree with you. Guru, same advice I was giving. Never quit your job before you have the next one. Absolutely. अमन क्या बोलता है? I'm a fresher with AZ 900, 104, 900 certification. I got job offer from one company, but it was revoked later. Can you guide me how to land a job in cloud DevOps field? So Aman, I've already put the DevOps roadmap in the comments. You can have a look at it. So you can go through it. Yes, right. Bilal says, I got no interview. Said, there you go, Bilal. So 500 places you applied, 0 interview calls, which is exactly what I was saying in the earlier. So if you keep applying like this, it is very, very tough to get a remote job. There, thank you, Bilal, for confirming what I was saying earlier. So the way to get a remote job is you cannot find a remote job. The remote job has to find you. Prashant, 5 years. Going with 3 years of fake experience. हैं? क्या मतलब? I want to get remote job in DevOps. Didn't get any call. I'm going with 3 years of fake experience. Please guide. क्या गाइड करूं भाई? चल फेक एक्सपीरियंस तो ठीक है, एक अलग बात है, बट वाकई में नॉलेज है क्या, आता है क्या, कि सारा ही फेक है भाई? क्या चाहता है यार? ऐसा मत कर भाई. Ashpreet Singh, no pain, no gain. Correct. All right. .NET developer. Hi, I'm Ambrish. I'm a .NET developer. I want to switch into data science program. Is this transition good at 10 years of experience? So, Ambrish, you're a .NET developer and switching to data science. Why that switch? Is it just because ML is sexy these days, or is this something deeper? Ambrish, I will put in my TopMate link here. You can have a look at it, and then you can reach out to me for a one-to-one. I think that will be better, right? Because ऐसे answer करना थोड़ा difficult है. So I'll put my TopMate का link here again. You can have a look at it. All right, guys. So this is my TopMate link. If you want to have a one-on-one conversation, I'm available. We are out of time, 1 hour and 5 minutes. But this was a great conversation. Thank you. And I took as many questions as I could. I think कुछ questions अभी भी unanswered रह गए हैं. But you can reach out to me on LinkedIn. And if some of you want to volunteer for setting up a Discord server, please do so and stay in touch. And I will see you again soon. We will keep doing this every alternate week. एक बार LinkedIn live करेंगे, एक बार YouTube live करेंगे. So we'll keep meeting. And then also, other than a remote job, if there is any other video that you want me to put up, send it to me on LinkedIn and I will add it to my list of things to do. Okay. All right, guys. Perfect. क्या बोल रहा है उत्कर्ष? सर DSA is still worth it or go with another fees? Last question. ये डिपेंड करता है ना तुम्हें करना क्या है. अगर कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट चाहिए तो उसमें तो DSA पूछेंगे ही. वो तो अभी भी चेंज नहीं हुआ इंडिया में, तो तब तो DSA पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास. और अगर इतना दम है कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करके वहां से जॉब ले सकते हो, तो फिर उतना फाइट नहीं है DSA का. सो इट डिपेंड्स आपको क्या करना चाहिए. ठीक है. Code with Saad. I will volunteer in setting Discord server. Perfect. Reach out to me on LinkedIn, Saad, and let's discuss here. Perfect. Thank you so much. All right, guys. This was great fun.
and I will see you in the next one. Okay, and let's keep talking. And Saad, reach out to me. Let's discuss about the Discord thing. All right, guys. See you then. Cheers. Bye.